on the Indian Women Startup Ecosystem sponsored by MSME Government of India. This prestige program is being organized jointly by the Department of Engineering Science and the Department of Management Studies of ABV-IIITM Gwalior. Over the next 5 days, we'll delve into how India is experiencing a transformative shift in the women-led entrepreneurship with increasing support from the Government of India through MSME initiatives, financial schemes, and policy reforms. This program aims to provide a comprehensive insight into the opportunities, government policies, and technological advancement that can empower women entrepreneurs to build and scale their ventures successfully. By fostering innovation and leveraging MSME support, we can pave the way for a stronger, more sustainable, women-led startup ecosystem in India. In our Indian tradition, every auspicious event begins with a blessing of the Almighty. Particularly in educational institutions, it is customary to invoke the blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge, through the lighting of the lamp and a prayer. With that, may I invite all our esteemed guests to join us for the ceremonial lamp lighting of Ma Saraswati. तुषारहार धवलना या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. Now I request all the guests to join on the dais. Now I request our guest of honor to join on the dais. राहुल जब बुके देंगे ऊपर से और नहीं तो यहाँ से नीचे से कर लेंगे, नीचे से कर लेंगे. May I request Professor Anurag Srivastava sir to extend a warm welcome of Mr. Anirudh Pratap Singh, the guest of honor for today's event.
Now, to formally inaugurate this enlightening 5-day journey, I take great pleasure in inviting Professor Manisha Ma'am to deliver the welcome address and share the valuable insights into the program. Namaskar, warm greetings. Wish you all a morning filled with happiness, kindness, and endless opportunities. Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. We start the event with blessings of Lord Ma Saraswati, who endows human beings with the power of speech, wisdom, and learning. On behalf of this advanced entrepreneurship skill development program and advanced management development program organizing committee, it's an honor, proud privilege, and great pleasure to welcome you all to this 5 days Ministry of MSME Government of India sponsored program on Indian Women Startup Ecosystem. First of all, we express our heartfelt gratitude to the Honorable Chief Guest, Dr. Sanjay Mahu, Head, National Media, BJP, Member of Legislative Council. And we are also express our sincere gratitude and thanks to our Honorable Director, Sir Professor S.N. Singh, for his constant guidance, direction, and motivation, and as a dynamic leadership for encouraging to organize this grand program. Further, we are grateful to our esteemed guest of honor, Mr. Anuruddh Pratap Singh, President Global Systems Private Limited Incubator, Automodata. We also express our grateful gratitude to our Dean Research Consultancy, Professor Rajendra Sahu sir, and the advisor of TIC and the nodal officer of ESTP, and also program coordinator Professor Anurag Srivastava and faculty coordinator Professor Manoj Das. And we are also grateful to all esteemed dignitaries, the guests, the participants, and the faculty members, the administrative staff, and each and everyone present here. We would also like to acknowledge and thank the special gratitude and thanks to Professor Anurag Srivastava and Professor Manoj Das, the coordinator of the Technology Innovation Incubation Center, for providing the unwavering support and commitment from the beginning to till the execution of the program. And I believe without their strong support and hard work, it would not have been possible. I would also like to express my gratitude and thanks to the student volunteers, organizers, staff for their hard work and unconditional support. From the core of my heart, I welcome all the women participants who have joined for this program today. At the outset, under the leadership of our Honorable Prime Minister, Government of India, we would like to acknowledge the Ministry of MSME, Micro, Small, Medium Enterprises, Government of India for Entrepreneurship and Skill Development Program. The objective of this program is to motivate the young professionals, men and women, representing the different sections, including the SCST women, physically handicapped, ex-servicemen, BPL persons, to consider a self-employment or entrepreneurship as one of the career options. The ultimate objective is to promote the new enterprises, building capacity of existing MSME, and to inculcate entrepreneurial culture in the country. Ministry of MSME envision a vibrant MSME sector by promoting growth, development of MSME sector,
including Khadi Village Coir Industries in cooperation with concerned ministries, departments, state government, and other stakeholders through providing support to existing enterprises and encouraging creation of new enterprises. Now coming to the theme of today's, the MDP, Indian Women Startup Ecosystem, that is women entrepreneurs who are independent, confident, and powerful. As a woman, we don't just contribute to the economy, but we also fuel the world with our compassion for humanity, passion for our work, business, and astounding work that fosters the creative souls. As a women entrepreneurs, we are tough on ourselves. We reach the standard for everybody. We can empower the next generation to succeed. In today's fast evolving world, the importance of fostering entrepreneurial spirit of young girls and women cannot be overstated. We are often motivated by a deep desire to make a positive impact on the world and create a meaningful and are driven by clear vision how our products, services, ideas can solve problems and improve the lives by contributing to the society. We are also inspired by Kalpana Saroj's the success story, the history of courageous female entrepreneurs in India started quite early. Kalpana Saroj, known as India's first female entrepreneur and the original slumdog millionaire, Kalpana Saroj is an Indian businesswoman, entrepreneur, and a TEDx speaker and the chairperson of Kamani Tubes in Mumbai. She bought the distressed assets of Kamani Tubes company and successfully steered the company back to profitability and received Padma Shri Upadhi. So with this inspiration, now I would like to outline the theme of today's program, India Women Startup Ecosystem, which has been prepared under the leadership and guidance of Professor Anurag Srivastava. And this entire the program has 19 sessions, and including the various relevant topics and subtopics. We have started with we'll start with the startup challenges, new startups, motivation and inclination towards entrepreneurship, work-life balance and mental health for women entrepreneurs, marketing and finance entrepreneurship and startup, patent strategies for startup, leadership development program for women employees, the Indian women startup ecosystem, its strengths and opportunities, social entrepreneurship impact startup led by women, funding options for women entrepreneurs, women in healthcare startups, women in agro startups, women in MSME and manufacturing, and building a scalable and sustainable startup model, mastering financial planning and investment, and recent IT technologies for startup. And these topics will be delivered by the various speakers from the academia and industry. So we have speakers also with Mr. Anirudh Pratap Singh, Mr. Varun Srivastava, Professor Anurag Srivastava, Professor Manush Kumar Das, Mr. Vikas Sinde, Mr. Avinash Mishra, Dr. Roshni Chakrabarti, Mr. Akshat Agrawal, Professor Moho Bhattacharya, Ms. Kirti Singh, Mr. Rajiv Kumar, Mr. Dr. S.K. Sarma. So this is how we have planned for this 5 days MDP program. So we are sure this program will definitely provide all of you a platform, and it will act as a stepping stone to explore the present and the future challenges
and it will provide you the best solution in women promising startup career. Once again, at the outset, we are deeply obliged and honored with your presence. And thank you everyone for gracing the event, and your active participation will make this workshop a great event. Wish you all a fruitful and memorable experience at ABV-IIITM Gwalior. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. Thank you everyone. Thank you, ma'am, for your enlightening words. Up next, I would like to invite Professor Anurag Srivastava sir to extend a warm welcome to the gathering and provide an overview of the institute. Thank you very much. So welcome the guest of the dais, Mr. Anirudh Pratap Singh, a great motivator, especially for the entrepreneurs, the startups. His own journey is very remarkable one, and now he's very well involved as a spokesperson for Bharatiya Janata Party. I welcome you to this particular event. I also welcome Professor Rajan Sahu, our senior faculty of this institute, and also the Dean Research and Consultancy. I welcome Professor Manisha Patnaik, who is coordinating this program, and also head of the Department of Electrical, Electronics and Department. My colleague Dr. Manoj Das, who is also joining with me in bringing this program from the Ministry of MSME, and also who is looking after the Technology Innovation Incubation Center. And of course, besides the people who are on the dais, the people of the dais are also equally important. I welcome all the girls sitting here. This is your program. So let's have a big round of applause for all of you. I welcome the professors who have allowed their students basically to join this program. Professor Sadhana Srivastava from PGRG College, Professor Joseph Singh from LNIP, and Dr. Mathur and colleague from Moran Girls College. And of course, there are many others, like there are few felicitations we are going to make today. You'll be seeing them on the dais very soon. We are going to felicitate them for their contributions. So once again, welcome to this particular event, and I take this opportunity to brief you about this particular institute, because I'm sure not many of you have visited earlier this institute. The name of the institute is Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior, and earlier it was started with simple Indian Institute of Information Technology and Management. Later on, to recognize and give the honor to the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, the name has been added to this institute. And the institute was conceptualized in 1996, actually in 1997, and the first batch entered in the campus in 1998. We are running various programs in the institute. There are 5 departments: Department of Computer Science, Department of Information Technology, Department of Management Studies, Department of Engineering Sciences, and Department of Electrical and Electronics Engineering. These are 5 departments we are running in the campus. Under the banner of these various departments, we are running total 12 programs. That includes graduate programs, BTech in Computer Science, BTech in Electrical and Electronics Engineering, BTech in IT, and recently we have started Mathematics and Scientific Computing as well. Besides this program, we have integrated programs, 5-year programs. We call it as a BTech plus MBA and BTech plus MTech program. So there are 2 other programs. And we also have 2 PG programs, 1 MTech program in various specializations, and also we have a management program, called it as an MBA program for 2 years.
Of course, there are various ways how to get admission to this in these programs. And besides this, UG and PG programs, we also have doctoral programs on the campus, PhD in various disciplines. All these, uh, 5 departments, they have different streams where we are conducting the doctoral programs. Without these, besides these academic activities, we also organize various skill development programs in the institute. And this is one of them, sponsored by various agencies. So various agencies like starting from DST, from SERB, AICT, and recently this particular activity is from MSME. And likewise, every year we are conducting almost 40 to 50 similar kind of FDPs or MDPs or skill development programs. We are nurturing various level of the people of the society to bring them to the mainstream and skilling them to make them compatible enough to meet the standards of the industries. As Professor Manisha Patnaik has rightly said, that that Indian women startup ecosystem. This is the program. Because of that, you people are here to listen various speakers. We have organized about 19 sessions, and under these 19 sessions, various speakers will be interacting with some of you. Of course, today's program is the program. We thought of inviting Anuj Pratap Singh, who is a real entrepreneur, right? And there is another Varun Srivastava who is also joining very soon. He will also be interacting with you. And after that, next 4 days, program will be for selected 25 to 30 students. And with this, I'm not take much of your time because we have already started about 30 minutes late. We wish you all the best and happy stay in IIIT Gwalior. Thank you so much. Thank you, sir, for your inspiring words. Now, to give us a comprehensive understanding of the advanced MDP on Indian women's startup ecosystem, I invite Dr. Manoj Das sir to brief us on the key takeaways of the session planned for the next 5 days. Good morning to all of you. Am I audible to all of you? Last time? Okay. Respected dais, respected dignity of the dais and participants. Today I got the opportunity to explain why you organize such activity. तो आज मैं हिंदी में बात करूँगा सब क्योंकि सारा स्टूडेंट है इस सभागृह में 93% स्टूडेंट वुमेन है and 7% स्टूडेंट्स ओनली मेल है 15 लोग यहाँ मेल बैठे हैं and 187 स्टूडेंट्स यहाँ पर फीमेल है It's a huge number. प्रश्न होता है कि ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं एंड किसके लिए कर रहे हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक हम रिसर्च कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि मेरा एरिया ही रिसर्च है तो मैं 2 स्कूल में गया था पूछने के लिए कि स्टूडेंट ने पूछा कि बताइए आपका करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है सब लोग हाथ खड़ा किए मैंने पूछा कि बताओ क्या करोगे आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 58 स्टूडेंट 2 चीज बोलते हैं इधर हम डॉक्टर बनेंगे नहीं तो इंजीनियर कोई थर्ड ऑप्शन के है ही नहीं तो बुद्धान बोले तो क्या आफ्टर 12 क्या करोगे सर मैं बायो ले रहा हूँ डॉक्टर बनने के लिए मैथ ले रहा हूँ इंजीनियर बनने के लिए तो उसके बाद हम देखा कि ठीक है मैंने बोला कितना पेरेंट है भी आपके यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर है पाले 5 स्टूडेंट थे जिसका फादर डॉक्टर है और 12 स्टूडेंट थे जिसका इंजीनियर है देन मैं पूछा कितना स्टूडेंट का फादर और मदर बिजनेसमैन है कोई हाथ खड़ा नहीं किया वहां पर 41 स्टूडेंट बिजनेसमैन थे कोई हाथ नहीं खड़ा किया एंड आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट whose father and mother businessmen मैं पूछा कि now you stand up why you are not explaining एक सुन के मुझे ताज्जुब हुआ वो बोले सर मैं अगर बोलूंगा मेरा फादर बिजनेसमैन है तो मेरा यहाँ मजाक उड़ाएंगे मुझे ये लोग से बात दिखेंगी सबका फादर यहाँ पर डॉक्टर है इंजीनियर है से तो मैं बता रहा तो मतलब है बच्चे का माइंड में ये भी से भरा जाता है कि अगर मैं बिजनेसमैन बनूंगा तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा मेरा प्रॉब्लम होगा तो वही से हमारा माइंड में स्टार्ट हुआ कि एंटरप्रेन्योर इज अल्टरनेटिव करियर फॉर द स्टूडेंट
क्योंकि अगर मेन प्रॉब्लम क्या होता है सोसाइटी में, सोशल स्टिग्मा होता है, समाज में कोई भी पेरेंट नहीं चाहते मेरा बच्चे एंटरप्रेन्योर बने, और कोई बच्चा पेरेंट नहीं चाहते मेरा बेटी को मैं एंटरप्रेन्योर से शादी कराऊंगा, पर सब लोग बोलते हैं मैं डॉक्टर इंजीनियर है ना। व्हाट हैपेंड, डॉक्टर बनने के बाद बनाते हैं दुकान, बनाते हैं अपना फार्मेसी का दुकान बनाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए बनते हैं कांस्टेबल। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव में एक करियर ऐसा भी होता है जो बहुत लुक्रेटिव करियर है, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन। इंडिया में 20% वुमेन बिजनेस ओन अप कर रहे हैं, 20% ऑफ जो भी बिजनेस है 20% ओन अप कर रहे हैं। 20% में 80% ऐसा है जो एमएसएमई का ऊपर वुमेन का बिजनेसमैन है, बिजनेस करता है। तो बिजनेस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। हमारा इंडिया में इसीलिए एंटरप्रेन्योर नहीं बन पा रहा है क्योंकि पहले पेरेंट को आपको समझना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर करियर है। जब तक ये पेरेंट नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटी को मैं एंटरप्रेन्योर बिजनेस से शादी कराऊंगा, मैं मेरा बच्चे को मैं एंटरप्रेन्योर का करियर बनाऊंगा, तब तक ये प्रोग्राम जो कराते हैं इसका कोई मीनिंग नहीं। दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। नाउ टेल मी क्यों कराया जा रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। हमारा एक सिस्टम है कि इंटरप्रेन्योरशिप को सिस्टम AAITM में हमारे पास 3 संस्था है। एक ई सेल है जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि आइडिया नर्चर करना है, मोटिवेशन करना है, एंड जो बेस्ट स्टूडेंट को हम लोग नर्चर करके हम नेक्स्ट करते हैं PIC इंक्लूसिव सेंटर है उसको भेजते हैं, सो दैट आइडिया को प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कि अगर वो आइडिया वेजिबल है, मार्केटेबल है, इनोवेटिव है, नोवेलिटी है, देन हम उसको फंडिंग करते हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ माइटी से कराते हैं। अगर हमने लास्ट ईयर मैंने 6 को फंडिंग किया था, अभी तक हम 28 स्टार्टअप को फंडिंग किए, आउट ऑफ विच 16 आर सक्सेस, 12 आर फेलियर। फंडिंग मतलब नहीं कि आपको सक्सेस होना है। अगर गवर्नमेंट बोलते हैं अगर आउट ऑफ 10 में अगर 2 भी सक्सेस हो गया दैट इज सक्सेस। अगर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं सक्सेस हो गया तो बिकॉज़ लॉक है, एंटरप्रेन्योर सक्सेस कभी होता नहीं है, अगर हो गया तो मुझे लॉक पड़ता है। तो इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ई सेल से हम लोग स्टूडेंट को मोटिवेट कराते हैं, टीआईसी में इसको नर्चर करते हैं, देन इसको स्केल अप ग्रांट के लिए हम अगेन मिनिस्ट्री अप्रोच करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में। हमारा 20 एंटरप्रेन्योर में 6 ऐसा है जो वुमेन एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल है। रिसेंटली हमने कविता कपूरेट है जो 10 करोड़ 15 करोड़ बिजनेस को संभाल रहे हैं, उसको हमने ये किया, वो हमारे प्रिपरेटिंग स्टूडेंट भी है। तो ई सेल है, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर बनाता कौन है, 3 आदमी बनाता है, एक खुद, सेकंड जब बढ़ाता है, आपको रोल मॉडल। जब तक आपको रोल मॉडल नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। तो एक देयर शुड बी रोल मॉडल। किरण मजुमदार वो तो हमने मैडम ने बोले, तो एक रोल मॉडल आपके पास होना चाहिए। डॉक्टर आप बोलते हो डॉक्टर बनना होगा, टेल मी एक रोल मॉडल बताओ, कोई डॉक्टर यहाँ पर ग्वालियर में वो किसी डॉक्टर जानते हो तो रोल मॉडल आपका हो सकता है। मैंने यही पूछा कि आप रोल बोलते डॉक्टर बनने के लिए बताओ, डॉक्टर का नाम बताओ ग्वालियर में, और इंजीनियर नाम बताओ, कोई बोल नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर तो बनना है तो है, मेरा फादर ने बोले डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर जो पढ़ने जाता है रोल मॉडल नहीं है, इंजीनियर जो बनना चाहता है इसका रोल मॉडल नहीं है। बनना है तो डॉक्टर इंजीनियर, पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, इनका देखोगे टेबल में एक फोटो लगाया जाता है, ओके, कि ये एंटरप्रेन्योर है, तो हमें इसे ही बनना है। तो मेरे हिसाब से है देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग एमएसएमई से फंडिंग लेकर आए, दैट इज पहले हमने किया आईसीटी एंटरप्रेन्योर, देन किया एससी एंड एसटी वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये हमारा जनरल वुमेन एंटरप्रेन्योर बात कर रहे हैं। पिछले साल हमने 6 प्रोग्राम लेके आए थे, एंड अब नेक्स्ट अप्रैल के बाद वी आर गेटिंग 9 प्रोग्राम विद द प्लान। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं कि हम स्टूडेंट मोटिवेट करें ना, उसी है यहाँ एक स्टूडेंट हमारा नहीं है, हम सोसाइटी का भी रेस्पॉन्सिबल लेते हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट को इसलिए बुलाते हैं कि आपको भी माइंड में ये होना चाहिए गवर्नमेंट क्या चाहता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एंटरप्रेन्योर का वर्ड एक बहुत बड़ा टर्म होता है, और एंटरप्रेन्योर नॉट बड़ा टर्म। इट इज ओके, लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर मींस रतन टाटा बिरला सोचते हैं, वो नहीं है। एंटरप्रेन्योर मतलब है आप सब लोग सेल्फ सफिशिएंट बनो, सेल्फ एफिशिएंट बनो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट शायद है, टीआईसी है, ई सेल है, एंड रिसेंटली हमें प्रोजेक्ट पाए सीबीडी प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम लोग 3 ग्रुप बनाए, स्टूडेंट टीम, फैकल्टी टीम एंड मेंटर टीम। इनको भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे। 6-7 का इसका भी प्रोग्राम है, 4 इंस्टीट्यूट के साथ 3 आईएम्स और एक AAIT ग्वालियर के साथ हमारा कंबाइंड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा 6-7 को। तो हमारा प्रयास है ये कि इंस्टीट्यूट में एक इकोसिस्टम बना जाए, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बना जाए, कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर चाहता है कोई एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, सोसाइटी सब आपको सपोर्ट करे। बट मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मेरा रिसर्च में नहीं देखा, जब तक सोशल स्टिग्मा होगा कि पेरेंट के माइंड में होगा कि बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, तो कोई मीनिंग नहीं है, सारा एजुकेशन हमारा फेल है। सो इन दिस आई होप कि आप लोग यहाँ पर जो भी हमारे रिसर्च पर्सन है सब हम अच्छा डिस्कशन बुलाएं, पार्टिसिपेट करिए, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स।
जैसे हम ऑब्जेक्टिव नहीं कि कल रात को आप इंटरनल बना लेंगे, हम ऑब्जेक्टिव कि आप एक दिमाग में एक छोटा सा एक कीड़ा जान लेंगे कि yes, there is an alternative career beside doctor, engineer, entrepreneur. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable insights. Now, I request Professor Rajen Sau, sir, to share his insights into the significance of women-led startups. Respected everybody. Sri Anirudh Pratap Singh ji, the jewel of one of the motivators, you can say. You must have heard him and you will hear him. It is our pleasure, sir, that you could grace the occasion. Respected you and respected everybody, Professor Anurag Srivastav, Professor Manisha Patnaik, Professor Manoj Das, faculty members here, honored guests, and you all. Everybody wants to be successful. Nobody wants to be less successful or a failure. But key to success lies the service that we offer is accepted, delighted by the service taker. And only mantra for success is work, pray, think, and believe. The most important part of it is you need to work. You need to pray. Pray means you need to be thinking that the service is not for self, service is for others. You must have heard Vivekananda ji. How was he accepted as a disciple? When the Guru visited the house, he was offered with certain fruits, and the mother called the child to bring a knife so that the food could be served. While handing over the knife, usually we hold the handle and offer the knife to somebody. But Vivekananda ji did the opposite. He offered the handle to the Guru, Ramakrishna Paramahansa. So this is where the service is. If I am offering, I am attentive, I can take the sap is, but my service should not hurt others. A service should have an intention of doing good to others. So you must think about it. How can I create better service? You must have heard now you want to become an engineer, you want to become a doctor. Engineers and doctors have been respected. Not that they have not been respected. One of the most valuable services today, whether it is to the human race or to the environment and society, these two people have served one of the best. Undoubtedly. Undoubtedly, they have served the best. But today, there's a challenge onto it. What is the challenge? The doctor doesn't need a compounder, he doesn't need a helping hand to write his transcription. He doesn't need it. He doesn't need to speak about your body. He doesn't need a patho lab to speak about
your body accretions and blood and etc. etc. Because if one scan of it can make everything be available to him in the form of data. It's available. So today the doctors are at stake. What is the stake? बहुत अच्छे बनो, नहीं तो आप ऐसे ही you will be one among many and you will not be wanted. So professionalism is at stake. पहले जमाने में हम बहुत सीखते थे, बहुत पढ़ाई करते थे, तब जाके कुछ बनते थे. डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना इतना आसान नहीं है. आज भी कोई डॉक्टर को बोलोगे तो there's no single medicine for a single cause. Because the cause can come from various sources. आपका बदन गर्म हो रहा है. It doesn't mean that you are having fever. Fever is an outcome. मैं अगर 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ूं तो भी मुझे फीवर आ जाता है, तो मुझे क्या मेडिसिन दिया जाता है? I am given a towel to cover my body so that I don't cool up quickly. वैसे ही बॉडी का कुछ भी चीज होते हैं तो जैसे गले में अटक जाता है तो खांसी आता है, कफ होते हैं, गले साफ करने पड़ते हैं. बॉडी अपना मैकेनिज्म है, पर ये बॉडी जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स के डेवलपमेंट में हुआ है, इसको समझना इतना आसान नहीं. 20-25 साल के लाइफ में. और आज मैं कहता हूं द प्रोफेशनलिज्म इज एट स्टेक. टू बी क्रिएटिव वी हैव टू अनबायस आवरसेल्फ. पहले बातें होते थे मेंटर होनी चाहिए, आज बातें हो रहे हैं रिवर्स मेंटरिंग. बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है देन द टीचर, तो वही चीजें पढ़ते रट के पढ़ रहे. And NEP says go out of it. There's nothing called rote learning. अगर उसको समझ में नहीं आता है तो उसको पढ़ना नहीं है, पहले समझो तब जाके अपना बनाओ. काउंटिंग जब हम करते हैं हमारे ध्यान में रह जाता है काउंट. 9 के बाद डबल डिजिट आएगा, 99 के बाद ट्रिपल डिजिट आएगा, 999 के बाद क्वार्टर डिजिट आएगा, हमें याद रह जाता है. टेबल जैसे हम पढ़ेंगे आजकल तो कम आते होंगे, टेबल हम लोगों के 1 से 35 तक अपने मन में रह जाता है. I can look at it and flush out what is going to be output. तो हमें दिख जाता है before I put a key in the data and get it from my calculator or my Excel sheet. Because mental model यहीं पे ही चीजें बनते हैं, सोचना पड़ेगा. Third point, you have to think मैं कैसे अच्छा करूं. A doctor also entrepreneur बनता है, engineer भी entrepreneur बनता है, एक businessman born entrepreneur होता है. Almost, because I won't say born means from the womb of a mother. I would say born means able to take risk at an early stages of life. वो रिस्क लेता है, उस रिस्क से वो वैल्यू देता है. और बिजनेसमैन एक छोटा सा दुकान भी खोलें वो भी रिस्क लेता है, उसको बिकेगा कि नहीं पता नहीं. कौन सा चीजें लोगों को पसंद में आएगा, कौन सा चीजें कम पसंद में आएगा. बिका हुआ सामान तो फिर वो भी तो खरीद के लाया है, लौटा नहीं सकता. Very difficult. Today it's highly challenging when you have such large number of platforms. इतने सारे प्लेटफॉर्म भरे हुए हैं और प्लेटफॉर्म में जो सर्विस आप देख लीजिए, गूगल का सर्विस आप ले रहे हैं, एनी बड़ी सर्विस दैट यू टेक, यू आर पेइंग 40%. हम जितना रेफरेंसेस नहीं लाते उससे ज्यादा हम प्लेटफॉर्म पे गेट करते हैं. उबर का कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है. they just have a thought. Drop out students, many of them have become successful entrepreneurs. आप देख लीजिए. तो पढ़ना और सक्सेसफुल होना एक लेवल के बाद पढ़ाई के यूटिलिटी कम हो जाते हैं. आपको पसंद है तो पढ़िए, सीखिए. बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग. पहले जमाने में 50 साल लगते थे नॉलेज को डबल होने में, आज 50 दिन लगते हैं नॉलेज को डबल होने में. जो पढ़ोगे कल आके टीचर से बोलोगे क्या पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्री कभी यूज में आता है, ट्रिग्नोमेट्री कभी यूज में आता है, बट बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है. tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, cos स्क्वायर,
बहुत तेज है, कुछ काम में नहीं आता। तो आपको सोचने पड़ेंगे कि मुझे क्या पसंद है। बिलीव इन योर सेल्फ, मैंने जो 4 मंत्र दिए हैं, वर्क, प्रे, थिंक एंड बिलीव, और उसमें जुनून आने चाहिए। मैं कर पाऊंगा, मैं दिखा दूंगा कि ये होता है, ये होना जरूरी है। हर बार जो बड़े कर रहे हैं और जैसे हो रहा था वैसे ही सोचोगे तो इंजीनियर, डॉक्टर ही बनोगे। कि आपको मंथ खत्म हुआ, तनख्वाह मिलना चाहिए, और आजकल नौकरी सरकारी नहीं है। यू मस्ट हैव हर्ड विद द बिगेस्ट थिंग इज नाउ इज दैट जॉब्स आर एट स्टेक। क्यों? हमारे जो कंप्यूटर कर रहा है, जो स्ट्रक्चर्ड है, और जाके ऑफिस में जाके हम दर दर घूमते थे, बाबू के लिए इंतजार के लिए बैठे रहते थे, और परमिशन मिल गया, थोड़ा बात हो गया तो कितना सुना है हमें पता नहीं, सुना है तो समझा है कि पता नहीं, समझा है कि करा है कि पता नहीं, करा है तो कहाँ पे है पता नहीं, डोंट नो। टुडे द सिस्टम कैन टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन। सर्विसेज हैव बिकम ई-गवर्नेंस। आपने सुना होगा अभी जब ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे बिगेस्ट डेमोक्रेसी हम कहते हैं, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के जब भी सरकार बने, 1 महीना करीबन हुआ है, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है, 20 जनवरी से शुरू हुआ है। तो आपने सुने होंगे कि डीओजी एक बना, गवर्नेंस। तो पहला है कि काट दो, जितने भी बेकार चीजें हैं काट दो, नौकरियां छटाई की जरूरत नहीं है, लोगों को रखा गया है। और जरूरत नहीं है मतलब लोगों का काम नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो दूसरों को काम नहीं करने देंगे। जरूरत नहीं है इस टाइप के सेवा, इस टाइप के सर्विस जो कि सिस्टम को नीचे लाता है, तो बहुत छोटा हो गया है। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब आप आएंगे, आप कल सोचेंगे कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं, मैं अपने लिए कमाऊं, मैं अपने लिए सक्सेसफुल बन जाऊं। देयर इज अ बिग चैलेंज ahead, a big challenge ahead. Challenge because professionalism is at stake. डॉक्टर आजकल डॉक्टर नहीं है, बहुत कम डॉक्टर है कि वो डॉक्टर है। जो डॉक्टर भगवान के नाम में दवाई देता है तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? मैं तो ऐसे ही फार्मासिस्ट से ले लूंगा, दुकान से जाके कहूंगा कि मुझे दे दो 2-3 चीजें। मुझे भी थोड़े थोड़े इंटरनेट पे मैंने सीख लिया है, दोस्तों से भी सीख लिया है, कॉमन दवाई तो मिल जाते हैं। वो आरएक्स लिख के भगवान के नाम में 3 दवाई देता है, 5 दवाई देता है, कोई एक लग जाए, तो मुझे ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए। मुझे ये ऐसे डॉक्टर की जोक है कि आपको ही, आई हैड अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। अभी मैं अहमदाबाद गया था कई एक टीम के साथ, तो तभी उन्होंने पूछा कि गंगे, और एक हमारे पार्थी थे जो कि लेके जा रहे थे अपनी माँ को डॉक्टर के पास। मैंने बोला आप तो हिमाचल के हैं और तो चंडीगढ़ तो पास ही है, तो सुनते नहीं, जो डॉक्टर अच्छे हैं उन्हीं के पास ही आते हैं सलाह लेने के लिए। उन्हें अपनी माँ को लेके आए थे और सलाह ली थी। तो डॉक्टर जो अच्छे होते हैं उनको लोग ढूंढते रहते हैं, और जो वैसे ही बैठे रहते हैं उनको कोई पूछता नहीं। तो प्रोफेशनलिज्म इज एट स्टेक। 50 साल के, मैंने कहा कि आज अब 50 दिन में ही नॉलेज डबल हो रहा है। तो जो आप पढ़े हैं आपको छोड़ना पड़ेगा, अनलर्न करने पड़ेंगे, रिवर्स मेंटरिंग करने पड़ेंगे। टीचर को भी सोचना पड़ेगा कि द यंगर जनरेशन इज मोर इंटेलिजेंट, नहीं तो ह्यूमन रेस कैसे बढ़ेगा? हमने तो इसलिए बढ़े क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इतने नॉलेज क्रिएट करे थे, उसके ऊपर हमने क्रिएट किया, तो हम इंटेलिजेंट बने। तो आप हमसे इंटेलिजेंट है ये मानना पड़ेगा, और ये रिस्क लेने पड़ेंगे, तब जाके the society will grow, you will grow, and all will be happy. Thank you again. Thank you, sir, for your kind words. It's now time to hear from the most distinguished personality of today's event, our guest of honor. Mr. Anirudh Pratap Singh is an active member of the BJP in India, serving as a national media panelist for the party.
He has held significant positions within the BJP's organizational structures, including National IT Head for the BJP Kishan Morcha from 2018 to 21 and National IT Head for the BJP from 2007 to 2010. His professional background is in engineering, and now in his role as a BJP spokesperson, he actively participates in media discussions and debates, representing the party's viewpoints on various platforms. May now request Professor Anurag Srivastav sir to facilitate the guest of honor. करा जल्दी है। May I now invite the guest of honor to address the gathering with his words of wisdom. नमस्कार ट्रिपल आईटी ग्वालियर और डायस पे डॉक्टर मनीषा जी, एमिनेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र जी, प्रोफेसर अनुराग जी, प्रोफेसर मनोज जी और सभी लोग। मैं अभी जब भी मुझे ट्रिपल आईटी आने का मौका मिलता है तो बड़ा मन से बड़ा खुश हो जाता हूं। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले जब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनता हूं तो उनकी लाइफ की सबसे बड़ी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी रही है इनिशिएटिव टू इंसेंटिव। हमेशा क्योंकि हमारी जो लाइफ है इन्हीं दोनों के बीच में पूरी फंसी हुई है और इन्हीं के दोनों के बीच में चलती, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे हमारे जितने भी करियर लाइफ के हुए हैं, ये इनिशिएटिव टू इंसेंटिव के बीच में रहा है। तो अभी हम लोग टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद में नो डाउट बैठेंगे और बड़ा अच्छा सेशन होगा क्योंकि उसमें डिस्कशन हम आज ये नहीं करने आए हैं कि बैठ के यहाँ पे बहुत से द्रोणाचार्य बैठे, मेरे से अच्छे एकेडमिक्स मार्क्स होंगे, मेरे से अच्छा इनको नॉलेज अपने विषय का होगा, मेरे से अच्छा आप लोग जितने यूथ हैं वो बोल सकते हैं। सिर्फ आज मुझे जानना होगा कि हम स्टार्टअप्स के बारे में जब बार बार डिस्कशन करते हैं तो मुझे जानना होगा आइडिया ऑफ इंडिया है क्या। पहले सबसे पहले अपने घर को जानना होगा, हमारा घर कैसा था और आज की जर्नी 10-15 साल की कहां पे हम खड़े, हमारा डेवलपमेंट मॉडल क्या है, कहां पे हमारा ग्रोथ रेट है इंडिया का और वर्ल्ड में हमारा पोजीशन क्या है। उससे डिफरेंट अपॉर्चुनिटी निकल सकती है और उस अपॉर्चुनिटी हम लोग कैटर करेंगे। साथ में गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिल सकती है, सिविल सोसाइटी हमारी क्या हेल्प कर सकती है, इन सब चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़े सेशन में लगभग आधा घंटा का समय आप लोगों से मैं चाहूंगा। तो टी ब्रेक के बाद मुझे जरूर समय दीजिएगा। टी ब्रेक के बाद ही करते हैं जी, ठीक है, क्योंकि बच्चे बोर हो जाएंगे और क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूं तो हम लोग टाइम ज्यादा ले लेते हैं बोलते को। Thank you so much, sir. Now we'll felicitate the great entrepreneurs. So the first, but we can do. So the first entrepreneur is Shraddha Sinha, director at Instant Rasoi. As I said in the beginning, you know that we are already running short of time, and that's the reason, you know, Anirudh Pratap Singh ji has said that we will take extra session. Of course, he's a spokesperson and he want to interact with all of you. It's not one way, right traffic like we are doing.
It will be interactive session. He'll be interactive with all of you in the next session. And as I said in the morning that we are going to felicitate a few entrepreneurs who has done wonders and contributed a lot as an entrepreneur. So we would like to felicitate them. For the same, we are inviting first Shraddha Sinha to be here on the stage, and I request Arun Pratap Singh ji to do the honor. आइए She is the director at Instant Rasoi, is revolutionizing the food industry with her innovative approach to healthy eating. She bridges the gap between nutrition and convenience by crafting the recipes using legumes, millets, and superfoods. She was leading Instant Rasoi. She continues to develop nutritious and delicious products, inspiring a movement towards informed and healthier food choices in India. So now I request her to share his kind words. Good morning, dignitaries, and good morning, beautiful crowd, the young minds, and I can see the fire in all of you, the way we all are here to learn from each other. And my journey has been a very roller coaster kind of a journey, but I chose entrepreneurship to be my career because like I'm a single parent of two daughters, and this was the only way I could bring them up quite well. And my objective has already always been like since I'm a mother that I always wanted to feed everyone the healthy and the tasty meal. So that's what I took. I saw the opportunity in and made it my career. So I would just request all of you कि आपको कुछ भी एक चीज हो जो आपको लगता है कि you can make a difference. Just pick it up, make it your goal, your objective, and it's a beautiful journey of being an entrepreneur. I'm enjoying it, and welcome to entrepreneurship. Thank you. बीच में बंद करता है तो बोल तो बंद ना करे तो क्या बंद हो जाती है ना मनोज सर उसको चालू रखो पता मनोज सर को बोल मैं तो तेरे को वो बता दिया मेरे को पता नहीं. Thank you so much, ma'am. Now, the next entrepreneur is Priyanshi Mishra. So, she is the young multidisciplinary architect and interior design studio. Our services ranges from hospitality, commercial to residential projects. So she believes that architecture is everywhere, from space within to outside and in between. The space which we try to create is always built around the inhabitant and people, which allows to experience more of what is physically present. So let's have a look at her video. Hi, this is architect Priyanshi Mishra, founder and principal at Ontogenic Design Studio. We started off this firm back in 2021 with the idea to do sustainable and innovative design practice. Currently, our project ranges from residential to institutional, spanning over 5+ cities across India. I want to thank Atal Bihari Vajpayee Institute of Technology and Management. I think his father is here. For providing me with this felicitation. Anybody from his family? Priyanshi's family? Yeah, please come. It's a proud moment for his father to receive his the award, Yeah.
So there are many other awards as well. So we have the next Nandini Sharma. Nandini Sharma is a part of the Bharat Tap fintech company. Nandini brings years of sales. She oversees sales and her expertise in the field, while also managing finances at Bharat Tap, making key decisions related to both. She holds more than 5+ years of experience in sales. May I invite, along with Nandini, to the smart chaps who is running the Bharat Tap on the stage, please. So Nandini will receive the award. That will be in charge of this. So these are the three partners who are running the Bharat Tap, and Nandini is part of that. So our award is basically to appreciate the efforts of the women from Gwalior or nearby Gwalior who are contributing to this particular domain. Congratulations, Nandini. Next is Srimati Rekha Shukla. She has gone. Okay. Anuradha ji is here. So Anuradha ji is running Aqualis. She's actually entrepreneur and she's doing various jobs, basically handcraft, watering, and many. Yes. So after Anuradha, we have Sadhana Gandhar. Sadhana ji is running Papad restaurant, right? Please. So these are entrepreneurs who have started from their journey from rural areas, and they have entered the market. Next is Neelam Kulshrestha. Neelam Kulshrestha. She is there? She is not there. Okay. सरस्वती देवी जी आप हैं यहाँ पर, आपका भी जो बिजनेस है और एक इंटरेस्टिंग फिगर मैं आपको शो करना चाहता हूँ. अनुराधा जी, नीलम, साधना, ये सभी जो बिजनेस कर रही हैं, टर्नओवर इज 20 लाख to 50 लाख रुपीस. आपको देखने में बहुत सिंपल से एंटरप्रेन्योर लग रहे हैं, बट दे लुक एट द टर्नओवर. So the fantastic achievement. So कई बार unsung heroes जैसे होते हैं ना, हम उनको. So with this, congratulations to all the entrepreneurs who have received the awards, and we have done the felicitation. Please. So with this, we are closing this, and before actually closing this particular session and inviting you, all of you, for the high tea arranged in the convention center, let me thank one and all, thank this particular inaugural ceremony, especially the people on the dais, Anuradh Pratap Singh ji, who has started saying that this program is basically initiative to the incentives. And he has initiated incentive, we will talk later after the thing. And Professor Sahu, and who is a senior most professor in the campus right now, and he has done a lot of work in the area of entrepreneurship, and especially he is the person from the finance. Thank you, sir, for accepting our invitation to join us in the program, both of you. Dr. Manoj Das, who has been right hand or left hand, whatever you say, with me in organizing such kind of events, FDP, MDP, or ASDP, he has explained very nicely that what basically entrepreneur means and what is the perception among the people in the society that her parents or her bacha doctor, engineer banna chahta hai, nobody is interested to become the entrepreneur or a startup. But the things are changing now. In the last 15 years, बहुत सारा change हुआ है, and that's the reason we thought of recognizing the efforts of those women and ladies basically. लोग ये सोचते थे कि women's entrepreneurship में कैसे आएंगी,
and see that how many ladies have joined us in this particular program. We recognize their efforts. Professor Manisha Patnaik, thank you, ma'am, for coordinating this whole event and making this possible uh, to organize this event, especially the inaugural ceremony today. And next 5 days, of course, we are going to have other sessions as well. Thank you all the entrepreneurs for accepting our invitation and joining this particular program. And of course, especially the girls from the colleges. I'm pretty sure that during the interaction, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, right? And when you will be interacting directly with Anuj Pratap Singh ji or many other speakers, I'm pretty sure that perception will get changed. Instead of becoming doctors and engineers, I'm pretty sure that you'll be interested to become businessman or entrepreneur and startup. Thank you so much. You are all invited for the IT arranged in the convention center. And after the 30 minutes, we'll again assemble here for the Anuj Pratap Singh's interaction session. Thank you.